Today morning, which class it was? सर किसी ने नहीं लिया। क्यों? गुजराती। हमारा कंप्यूटर का था पर नहीं आया मैसेज कुछ। ऐसा। हमारा गुजराती था। तो रमा मैडम ने लिया ना? आई थिंक मैंने मैसेज तो देखा था उनका। हाँ, हाँ। उन्होंने लिया, रमा मैम और शैलेश सर ने। हाँ। सर ने पहले कहा था कि वो नहीं लेंगे, डायरेक्ट दूसरे लेक्चर लेंगे। हाँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल का टाइम मिला ना। आपका बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक चल रहा है? हाँ सर। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। वो कैलकुलेट करके मतलब दिखाने वाले थे वो हाँ केसेस वाला। हाँ हाँ हाँ, हम दिखाएंगे दिखाएंगे। अभी I'm sharing my whole screen with you. Okay. यस। अभी what I wanted to show you today, I'll be showing you two things. One is, if you remember, we had a graph. Yes, sir. Various materials and their behavior. So it looked like this. What is that graph? It was given in note also. Yeah, this graph. Look at figure 3.11. What was the meaning of that graph? Hello? As temperature increases, resistivity decreases. Decreases. For which material? सेमीकंडक्टर। Semiconductors. Okay. Can you see something on your screen? Yes, sir. Okay. So basically what it is, यस सर। now it is clear. Some of you might be knowing what is this. ये जो डिवाइस है, what is it called? Resistor. No, it is a diode. Okay, डायोड। it is a diode. We are going to study about this, and you have got a practical also, but that is in second part. Basically, it is a semiconductor device. Which kind of device? Semiconductor. Okay. This is voltmeter. It is combination of various meters. Okay. So if I can show it fully, this is how it looks. Okay. Some of you might have already seen. See, if I put it here in this range, here it is, the red color one is the resistance range. It can measure up to 2000. Here it can measure up to 20,000. Okay, let me keep it steady. Here it can measure all the way up to 200 kilo ohm, and this is up to 2 mega ohm. Okay, this is DC volt range, 200 millivolt
2 volt, 20 volt, and so on. Okay, this is off. This it measures AC voltage. You could see this is a curve sign is there, no wave sign. That means it is AC voltage, and there is a lightning symbol. It is dangerous to deal in this range. It is here, it measures 600 and 200. This is symbol of AC. Okay, now here it is written A for ampere. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so Yes, A sir. for ampere, and there is one horizontal sir. line and one dotted line. Means it is DC current, 200 microampere, 2 milliampere, up to 20 milliampere, up to 200 milliampere, and up to 10 ampere. Then HFE, it is current gain of a transistor. Again, that comes in semiconductor physics later on. Okay. What I'm going to do now, I'll put it in diode testing. This symbol of diode. Okay. And if I connect my props here, it's not going in. Never mind. Now see, I'm connecting diode like this. Okay. Red on left and black on right. It shows 0.462 ohm. Okay. It is in kilo ohm range. So it is 462 ohm. Okay. Now if I reverse the connection, means red on left, black on left, and red on right, it doesn't show anything. Current is not flowing. Are you getting my point? One way current flows, other way, if I put it in the reverse way, now current is flowing. So this is peculiar property of semiconductor, that current flows one way, other way doesn't flow. See, it is showing 0.461 in the meter. But if I reverse the connection, it doesn't show any reading. Okay. I'm putting in 20 cohm range. Here it will show. See, one more thing I forgot to mention. If I connect both the props together, now they are in contact, so resistance between these two probes is 0 ohm. Okay. Okay, I have to put it like this. Okay, what it shows, 0.460, it means 460 ohm current is flowing through this. Is it been seen by all of you? Yes, sir. Now you have to watch it carefully. I need to light up a matchstick, and it becomes difficult for me to do so. So I'll need somebody's help. So hold on, I'll call Kush. Okay. So Kush, कुशाग्र, कुश, आओ तो 1 मिनट ऊपर, 1 मिनट ऊपर आओ तो।
અહીંયા ઉપર હવે હું ડેમો બતાવું છું ને તારે માચીસ સળગાવવાનું છે અને જસ્ટ હોલ્ડ ઇટ. ઓકે, તો અહીંયા ઉભરી જાય. माचिस ले लो. सर ये डायोड का यूज क्या होगा? Diode is used in your rectifier. Rectifier is a device which is, now let me complete this. Now see, Kosh is here to help me. You can't see, but he is present, and you will bring the flame close to this diode. Right? I showed you in wisdom Okay. that same thing. I don't know. Okay, never mind. Light it up. नजीक लो. I'm heating it up. It is चालू रखो भाई. એવી રીતે રાખીશ તો ઓલવાઈ જશે. ठीक है. ડિક્શનરી પર નામ વાંચીશ. सर थोड़ा इस तरफ हो. હા બે સળગાવીને મને આપી દે. ચાલ हम्म. આમ ન પકડાય, આમ પકડ તો સળગેલું. हम्म. Now see, I'm lighting it up. I'm making it heated up. Okay. चेंज See? होने लगा. से हुआ. कम होने लगा. Right? Now see again, it started increasing. सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी. सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे टेम्परेचर बढ़ता है. वैसे ही resistance कम होगा. हाँ, now I'm going to repeat सर it ये once. आवाज किसका आ रहा है? किसका? I'm ये not आवाज getting it. सर सर हमें आ रहा है कौन सा आवाज आ रहा है? एकदम ऐसे ना, उसी पहले इसको खत्म करो. साउंड हो ना. ऐसा, ये देखो, बीप जैसा. कम हो रहा है. हाँ. हाँ सर. अभी कम हो गया. अभी ठंडा हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. सो लोअर द टेम्परेचर, हायर द रेजिस्टेंस. Right? See, it is coming back to normal. यस. So this is property of semiconductor. As it was getting heated up, higher the temperature, more the covalent bond breaks. So it generates more number of charge carriers. So conduction becomes easy, and so the number becomes smaller and smaller. Okay, sir? Yes. Now Yes, your sir. audio issue is there. हाँ सर, कोई बीप साउंड सुनाई दे रहा है सर. ऐसा है. शिवम, तुम्हारा माइक बंद करो. सबका माइक बंद करके, सबका माइक बंद करो. Is it audible to all of you again? Still? Yes sir. हाँ. So, okay, hold on. I'm going to mute my mic and then see how it goes. Okay, then I'll ask after. Disturbance create हो. नहीं आ रहा सर. तो अब ये नहीं आ रहा. from my अब end, नहीं आ रहा सर. it is from my end. Let me see. Okay, is it clear now? Hello? सर आप बोलते हो अभी ना आ ही तभी आ रहा रहा है. है. हाँ, आप बोलते हो ना तभी आ रहा है. Let me check my. जोर से भी नहीं आ रहा है कि डिस्टर्ब कर, मतलब थोड़ा ऐसा, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा आ रहा है. All of you silent, please. Hello, hello. Yeah, microphone is working. Hello, hello. Yeah, microphone is working. So still the problem persists. Hello. हाँ सर वो तो बहुत कम आ रहा है पर. We have to live with that. Okay, here I am helpless. Okay, so I believe you understood how semiconductor behaves in a different way. ठीक है. अच्छा, तो आज का भी आगे का टॉपिक है, वो है कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर.
Now, have you seen carbon resistor? Yes, sir. What sir? Carbon resistor have you seen? यस सर, आपने जो वीडियो भेजा ना उसमें देखा उसमें मैंने। दिखा था। हाँ, मैंने वीडियो भेजा, किसने देखा? लास्ट ईयर यूज किया ही था ना आर्डिनो हाँ, में। आर्डिनो में यूज़ किया था। आई एग्री, मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दैट, and that was the benefit. I think I told at that time also that if you are attending now, it will help you in 12th standard. So here it is the same case here. Why do we, question number 1, why do we need resistor? To limit the flow of Flow of current. To limit the flow of current. Okay. I'm going to show various resistors. Here I have got this box, and this is 100k, 47k is empty. Okay, now see, look at the size. This resistor is very small. Right? Yes. Compared with the size of this pin, it is damn small. Yes, sir. Okay. Now it offers certain ohms. How will come to know that how many ohms it offers? So one option is to write on its body. The body itself is so small, one cannot write. And if it is written with some device, then we cannot read. So this problem is sorted out by putting bands on it. You can see there are certain bands. color bands. These are called color bands, right? So from this color band, one can read the information. Okay. Yellow, Now- red, black or Now if I have drawn the diagram, yes. So how you will hold the resistor? You will hold it like this. The topic is how to read color code. Okay. So this is that resistor. Now this cluster of 3 bands should be on left hand side, because somebody may hold it other way around, reverse. तो पूरा situation बदल जाएगा. So when you are holding it, you have to hold like this, where cluster of 3 band is grouped and it is on left hand side. Okay. Now each color has one meaning, one digit associated with it, One value. one value, and then there is a method to find what that value is. Okay. Now see here. This is first band. This is second band. This is third band, and further one is fourth band. Now what is the benefit of coding like this? So first and second band gives you first 2 digits. Third band gives multiplier. Fourth band gives tolerance. So this part we'll discuss afterwards. Let's start with this. What color do you read? yellow, red, Red, Yellow, red, Yellow, golden. yellow, red, black and golden. Right? First is yellow, red, black and golden. So then what you have is 42, yellow, 22, red, black and golden. minus 5%. So there is one sentence written over here. B.B. Roy goes to Bombay via Gateway with gold and silver. B means black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey and white. We are considering only these bands so far, right?
So yellow and red will give you first two digits. So yellow corresponds to 4. So write 4. Second band is red, right? So red corresponds to 2. 2. Okay. Now this is multiplier band as it was written here. First two digit given by first two bands. Third band gives multipliers. In what sense multiplier? Blue means 0. blue. It was blue, no? Blue 6. Blue means 6. To 6. ब्लैक का होता Sorry, black था. 0. So into 10 raised to 0. 0. Okay. एक इसको बाद में डिस्कस करते हैं. So this is 40. Anything raised to power 0 is 1. So answer is 42 ohm. तो ये रेजिस्टर का वैल्यू कितना आया? 42 ओम, 42 ohm. राइट. उसको वेरीफाई करते हैं अभी. इसको देखो 200 ओम की रेंज में रखा है, ठीक है. और इसको मैं यहाँ टच करता हूँ. It shows 47 ohm, not 42 but 47. Okay. Yes, sir. So this variation of 5 ohm has come. So by measurement what we got? R measured is 47 ohm. Reason क्या आया? So reason is here. गोल्डन बैंड था ना, हाँ सर. तो उसमें देखो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है टॉलरेंस का लिखा है. देखो टॉलरेंस गोल्ड के लिए कितना लिखा है? 5%. 5 5. तो इसका जो वैल्यू है जितना भी आप मेजर करते हो, इट इज हैविंग 5% वेरिएशन, राइट. सो नो रेजिस्टर कुड बी परफेक्ट प्रिसाइज. इफ इट इज गोल्ड बैंड इज द फोर्थ बैंड, 5% वेरिएशन. सिल्वर इज देयर देन 10%, and no color means 20% variation. Are you getting it? Yes, sir. Now what I'm going to do, I'll put one more resistor of different value and you will tell me what it is. Okay, now I need to show you the code, right? Can you read the color? No sir. We can't identify the colors, sir. It is difficult. सर वो लाइट की वजह से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ब्राउन है ना. ब्लैक 3 ब्लैक I'm color ब्राउन blind. है, बाकी 2 ब्लैक है. Is it making any sense? सर आप ही बोलो ना क्योंकि हमें कुछ करना अरे है. मैं तो color blind हूँ. I'm color blind. And now with specs also. Okay, we'll do reverse way then. Let me find another resistor which color code is seen and resistor is bigger. Let me see if I have. I've got my own lab at home. Okay, इसमें दिखता है देखो. हाँ सर इसमें दिख रहा है कलर. ब्लू रेड. ब्लू रेड. बीच में रह गया एक
मतलब ग्रे अरे बीच silver, में भी एक है। रेड पहला ब्लू है, कंफर्म है, राइट? ब्लू ग्रे रेड ब्लू ग्रे रेड, सिल्वर है सिल्वर बीच में नहीं आ सकता। गोल्डन ब्लू ग्रे रेड गोल्डन। गोल्डन ओके ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं। तो ये है ब्लू, ब्लू था, कौन सा था, ग्रे था, रेड गोल्डन। शिवम सर को बोलने देना। हाँ, ब्लू से ब्लू मतलब कौन सा कलर आएगा? 6 6। आएगा ना ग्रे मतलब 8, 8 तो 6 8 आ गया, फर्स्ट डिजिट आ गया। दिस इज मल्टीप्लायर, थर्ड बैंड, सो इनटू 10 रेज़ टू 2, 2 and gold means plus or minus 5%. -5 Hello, Shivam, I am speaking. Okay, so this becomes 6800 ohm, or one can also write is 6.8 kilo ohm. Is it fine? yes Now let's check it that our measurements are fine or not. Now your common sense, can I use this range, 200 ohm range, to measure 6.8 kilo ohm? No. No. oh Can I use this range? It goes out only up to 2. Not possible. oh 20 k ohm? 20 Yes. yes So let's Yes sir. put the probe. 6.65 kilo ohm, right? So our answer is correct, 6.7 kilo ohm, and there is plus or minus 5% variation. Understood? सर मतलब तो सर इसमें मतलब मेजर करने के लिए हम सारे 2 मेगा वोल्ट पे क्यों मतलब मेगा ओम पे क्यों रखते हैं? सब मेजर हो जाएगा ना उसमें। किस में? मेगा मतलब ये किलो ओम में है। मतलब 2 मेगा ओम में ही सब रखते थे तो सब कुछ 2 मेगा ओम में रखते हैं तो नहीं है मेजर है। देखो यहाँ पर मेजर तो वैल्यू प्रिसाइज नहीं आएगी, 0.006 0.007, इट इज़ राउंडेड ऑफ, तो बाकी के डिजिट नहीं आएंगे। आर गेटिंग माई पॉइंट? इसको 200K पे रखेंगे तो थोड़ा प्रिसीजन बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर डेसिमल सेकंड डिजिट इज़ नॉट कमिंग। और 20K पे रखेंगे तो आफ्टर डेसिमल सेकंड प्लेस भी आता है 6.63। आर गेटिंग माई पॉइंट? अभी 2 मेगा ओम में इस रेंज पे रख के हमारा जो 47 ओम वाला था वो रखेंगे तो कुछ भी रीडिंग में आएगा ही नहीं। ठीक है, so what point I was trying to highlight that, see, we are running out of time, but not to worry, if we get disconnected we'll again bounce back with the same ID. Okay, so this issue is solved. Any doubt so far? No, sir. Okay, now let's do reverse. What we are going to do is, you have to tell me, I'm keeping it folded so you will have better idea. This color code is in front of you and you have to tell me, you have got red, red, red and silver. What is resistance? 22 into 10 raised to 2. Red means minus 2 minus 10 raised to 10 raised to 2 plus or minus 10% 10%. is 2.2 kilo ohm plus or minus 10%. 10% means it will be going to be 220 ohm, it could be more
or it can be 220 ohm less. Okay sir? यस, यस सर. Okay. तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा. हाँ, ये मेड इन चाइना होता है तो फिर प्रॉब्लम होता है. See, there are military made resistors, commercial made resistors, so the quality would differ. If it is military grade resistor, value will be very very precise, no variation is tolerated. Commercial grade, slight variation is fine, and for lab purpose 20% is also fine. Okay, suppose color is black. Okay, I'll not start with black. Yellow, green, blue, and there is no other band. How many ohms it offers? Now tell. Yellow means 4. Green means 45 into 10 raised to 6 plus or minus 10 raised to 20. 6 20. plus or minus 20%. So this can be written as 45 mega ohm. 10 raised to 6 is there, no? So it becomes mega ohm. Okay, sir? यस सर. Okay. You have to tell me for 100 ohm resistor what will be color code? ये हिंट दे रहा हूँ आपको. Blue, Brown, black. Brown, black, Brown, black, brown, black, black. नहीं, ब्राउन ब्लैक. फर्स्ट मतलब ब्राउन, then 0, ब्लैक. so black. So ये बन गया 10. Brown. Now 10 raised to 10 करना है ना, ब्राउन है ना. so again ब्राउन आएगा. अच्छा हाँ. So ये हो गया 1, ये हो गया 0 into 10 raised to 1. So आंसर 10 into 10 equal to 100 ohm. और चौथा कलर भी तो होना चाहिए ना सर. Plus or minus 20%. Made in India. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि चौथा कलर. हाँ यार, not necessary. It might not be there at all. ठीक है. सर लेकिन हम resist Yeah. You're saying something? कौन सा? Speak little louder. अभी आपने कहा कि अगर कोई कलर नहीं है तो टॉलरेंस प्लस माइनस 20, तो हाँ. अगर कोई कलर नहीं है तो वो नो कलर में ही रहेगा ना. हाँ, नो कलर. ये 20% प्लस और माइनस 20% समझ लेने का. नो कलर है. Right now I'm giving you practice of reading this first 3 digit. Okay? सर लेकिन हम रेजिस्टेंस हमें दिया है तो उसका कलर कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं सर? लेकिन अगर हमें ये टॉलरेंस के हिसाब से चेंज हुआ तो हाँ, होगा ना. तो आप ये मार्केट में से ऐसा रजिस्टर लेकर आए जिसमें 3 बैंड ही थे, 4th नहीं था, तो आपको 100 ओम मान के चलना है. बट कीपिंग इन माइंड इट वैल्यू माइट बी एज लो एज 80 ओम और एज हाई एज 120 ओम. इट कैन हैव वैल्यू विथ इन दिस रेंज, राइट. और जनरली हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, सपोज यू आर वांट टू मेक वन एलईडी, उस पर करंट फ्लो कंट्रोल करना है. यहाँ पे आपको मान लो 3 वोल्ट देना है या रजिस्टर रखना है, 100 ओम आया मान लो, तो थोड़ा 80 या 120 होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. एलईडी थोड़ा ब्राइट या कम ग्लो करेगा. ओके, सो इट इज़ नॉट दैट सेंसिटिव डिवाइस वेयर दिस रजिस्टर वुड डू. बट जहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा तो यहाँ पर आपको यू नीड टू हैव प्लस और माइनस 5% और प्लस और माइनस 0%. यू नीड वेरी हाई प्रिसिजन. ओके, हाँ આતિફભાઈ. હા, અરે પ્રભુ, હું હજી ક્લાસમાં છું. તમે 25 મિનિટ એટલે 11:30 આવો ને, અને આવી ગયા હો તો ઘરે આવીને બેસો નીચે, વાંધો નહીં, હું હમણાં આવું છું. ઓકે, હા.
So I hope Achyut, did I make my point clear? कि ये नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हाँ? 100 ओम आपने दिया, उसके ऊपर से आपने बोला कि कलर कोड बनाओ। गेस करो। हम्म, तो सर लेकिन 600 या 700 या ऐसा हायर रेजिस्टेंस वाले रेजिस्टर्स तो एक मिनट ना, उसके कलर कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं? कैन यू रिपीट योर ये क्वेश्चन? कलर हो जाएंगे ना। अच्युत, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर हायर रेजिस्टेंस है जब 600,000 या ऐसा कोई रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो उससे हम कलर कोड कैसे फाइंड कर तो सकते वो हैं? चलो क्योंकि उसमें तो 75 मेगा ओम लेते हैं। तो मान लो आपको 100 मेगा ओम, ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ गया। फाइंड कलर कोड, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कलर कोड बनाओ। मेगा मतलब 10⁻6 कैसे करेंगे? वन। कैन आई राइट दिस इक्वल टू, ब्राउन ब्लैक में और वहाँ पे फिर लिख 10 देंगे ना 7 ब्राउन की वाला। जगह पे। ऐसा लिखो तो चले? हाँ, हाँ। लास्ट में चला वायलेट ना? आ गया ना। तो अभी कलर कोड कैसे आएगा? ब्राउन ब्लैक वायलेट। ब्राउन ब्लैक, नाउ यू वांट 7, सो वायलेट। इज इट क्लियर नाउ अच्युत? सर लेकिन ये तो हमने मतलब राउंड ऑफ मतलब वैल्यू से मतलब 100 मेगा ओम, लेकिन हम अगर 625 ओम या ऐसा कुछ हम तो नहीं लिया आएगा, फिर ओनली फर्स्ट टू tolerance डिजिट। के हिसाब से चेंजेस होता है ना। हाँ, तो योर पॉइंट इज सपोज 627 हो, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल। ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल प्रैक्टिकली। ये कलर कोड होता है ये ना। I have brought this box, okay, from Gopal Electronics, right? You can see the list here. ब्लू। It is having only 2 digits, non-zero digit. First 2 digits are non-zero. Third digit is always 0. This is 10 ohm. E means ohm in electronic language. 470 ohm, 1 kilo ohm, 1.5 kilo ohm. This is 2.2 kilo ohm. Red, 3.3, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2, 10, 15. Now see this list. You don't go to the third digit because there is no provision. Because you will go for third digit, you will need 4 bands. So that's 5 bands you will require. So in रजिस्टर नहीं आते। क्या बोले? रजिस्टर नहीं है, मार्केट में मिलते ही नहीं है। और आप कोई सर्किट आइडिया देखे, सर्किट डिज़ाइन देखे कहीं पर भी, तो वहाँ पर भी वो नहीं होते हैं। यू ओपन एनी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट बुक, you will find only these values which I